Hi guys, I hope you're all fine. I hope you're all having a good day. I'm back with another video, volume and surface area. Volume and surface area as per CAIE, it is 5.4 for objective. Cuboid, prism, cylinder, sphere, pyramid, cone. These are the 6 types of shapes that we are going to cover in volume and surface area. However, in this video, you're only going to cover the first 3, that's cuboid, prism, and cylinder. Because if I go on making a single video for all the 6 of them, it's going to be really long. Hence, I've decided to break it. So this one is only the first 3 components, and then the other one, there will be a part 2 of this video, which will have the next 3. This is from the source book, New Syllabus Mathematics, book 1 and book 2. The first 3 are from book 1, and the next 3 are from book 2. All right, so first we speak about cube. When we speak about cube, the cube has a formula: volume is equals to L cube, and surface area equals to 6L square. Here L stands for length, and as you know that cube has length, breadth and height all 3 same, hence we have 6L square. However, when we speak about cuboid, the volume is length into breadth into height, and the surface area is 2 multiplied by LB, which means length into breadth, plus LH, which means length into height, plus BH, which means breadth into height. So the sum of all these and that the entire thing multiplied by 2. All right. Okay, let's look at this question. And if you want to take a screenshot or something, you may, and then we'll start solving it. The question is saying that a cuboid with dimensions 28 centimeters by 8 centimeters by 15 centimeters has a volume of 6720. The question wants you to figure out the breadth of the cuboid. Let's see how do we do this. And then there's another part which will ask the cuboid is melted to form smaller cubes of length 4. How many cubes can be formed? Okay, so again, to solve part 2, we need the volume, which is already there. Let's focus on part 1 right now. All right, so let's start solving this question. A cuboid with dimensions 28 centimeters by b centimeters, 28 centimeters by b centimeters by 15 centimeters. The formula of volume is equals to length into breadth into height. And here my length is 28 multiplied by breadth, which is b, multiplied by height, which is 15. And I do have the volume, which is 6720. So what I'm going to do is I'll multiply 28 and 15 and then divide them with the 6720. So 6720 will be equals to 28 multiplied by 15 is going to give me 28 into 15. Let me just do that. Okay, that gives me a 420. So 420 multiplied by the b. Now 420 goes on the other side and gets divided. 6720 over 420 equals to b. B will be equals to 6720 divided by 420, which gives me a final answer of 16 centimeters. That was easy. This was part 1, by the way. All right. For part 2, the question is asking me that if the cuboid is melted, which means the volume doesn't change even if it's melted, the volume remains the same. Then they need to form smaller cubes of length 4 centimeters. Let's see how do we do this question. All right. So if the question is telling you that they need to form smaller cubes of length 4 centimeters, then first we need to figure out the volume of the smaller cube, which will be equals to L cube, which is equals to 4 centimeters का cube. जिसका आंसर आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब अगर हमें एक ब्लॉक ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब है and the total volume of the entire thing is 6720, to find out कि total cubes बनेंगे कितने, हम volume को divide कर देंगे with the size or the volume of this smaller one, which is 64. The volume is 6720 divided by 64. When I divide these two, I get a final answer of 105. So the number of cubes that I'll get will be 105 cubes, and that is it. Okay,
Let's move on to the next question. Oh no, not next question, next shape. Volume and surface area of prism. इधर वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेस एरिया इनटू हाइट एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय द बेस एरिया। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर फॉर्मूलाज ही थोड़े से हमें इनवॉय कर देते हैं, थोड़ा सा हमें इरिटेट करते हैं क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं और हमें याद करने पड़ते हैं। अच्छा, सीआई में द फॉर्मूला शीट दैट दे गिव उसके अंदर कुछ तो होते हैं बट नॉट ऑल। और क्या कहते हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि एज यू डू मोर क्वेश्चंस, एज यू डू मोर प्रैक्टिस, स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ी सी आदत हो जाती है और याद हो जाते हैं फॉर्मूलाज। बट अगेन देयर इज अ चांस ऑफ फॉरगेटिंग, सो द की टू मैथ्स एंड एवरीथिंग इज टू मेमोराइजिंग इज keep on revising as much as possible. Let's look at the question. The question is saying for each of the following prisms, find its volume and the total surface area. अच्छा जी, so basically ये दो prisms हैं, हम इनके अंदर से part A वाला prism solve कर लेते हैं because part B वाला करना कोई खास मुश्किल नहीं है। उसको तो you can easily break it into two cuboids from here and also do it. यहाँ पे अगर आप you make a line तो वो two cuboids में divide हो जाएगा और उसको फिर add कर सकते हो volumes को। However, when I'm doing for surface area, वो different होगा। So I'm doing it for part A, both the things. And part B, no. Alright, let's move on to the next shape, which is, okay, volume and surface area of prism. Either volume is equals to base area into height, and surface area of the prism is equals to perimeter of base multiplied by height plus 2 multiplied by the base area. Base area का मतलब है जो base होगी उसका area. बेसिकली इस टॉपिक में जो मेन प्रॉब्लम है वो फॉर्मूलाज ही होती है, उसको याद करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है हमें। तो यह है कि सीआईज में देयर इज अ फॉर्मूला शीट और कुछ फॉर्मूलाज तो हमें मिल जाते हैं बट सारे नहीं मिलते। तो इन एनी केस आई वुड सजेस्ट आप जो है इनको जरूर प्रैक्टिस करें एंड मेक श्योर दैट यू नो दीज फॉर्मूलाज। ओके, ऑलराइट, द फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अच्छा जी, ये मैंने पिक्चर आपको दिखा दी है, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट और समथिंग प्लीज डू सो। ओके, सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं which was, okay, part 1 is, okay, part 1 which is to find out the volume of the shape. वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने अभी पीछे देखा था was base area multiplied by height and then base area का मतलब है इधर हमारी base we can see is a triangle, तो base area का फॉर्मूला इधर आ जाएगा 1/2 multiplied by into height multiplied by the height of the prism. Half into base into height के according, just for the triangle it will be half into 6 into height हमारी है 4 multiply by the entire prism की जो height है वो 15 है। इसको अगर मैं solve करती हूँ तो I'll cancel the 2 and the 6, यहाँ पे 3 बचता है। 3 into 4 gives me a 12 multiply by 15 which will give me a final answer of 12 into 15 will be 180. So 180 centimeter cube is my formula. Okay. Part 2 में the question is asking me for the total surface area. अच्छा, surface area का हमने पीछे फॉर्मूला क्या देखा है, हम एक और दफा चेक कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सो पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 times the base area, 2 times the base area। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल्स अगर पता हो तो पहले मल्टीप्लिकेशन होती है उसके बाद ही एडिशन पॉसिबल है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब हो गया ये जो बेस हमारी ट्रायंगल है इसकी बेस। If one side is 5, obviously the other side is also 5. So 5 into 5 plus 5 is a 10. 10 plus 6 is a 16. तो पेरीमीटर मेरी इधर आ जाएगी 16 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारी प्रिज्म की हाइट विच इज 15, हमने वो हाइट ले ली एंड उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 times द बेस एरिया। बेस एरिया हमने इधर ढूंढा था विच वाज 12, तो हम सेम बेस एरिया यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। इस पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो 16 into 15 पहले करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 16 into 15 gives me a 240 और 240 के बाद प्लस 2 into 12 is a 24, so equals to 264 centimeters is my surface area।
वॉल्यूम का मतलब होता है हाउ मच लिक्विड कैन बी पोर्ड इनटू दैट शेप, या फिर उस अमाउंट को अगर मेल्ट कर दिया जाए या फिर उस क्यूब प्रिज्म किसी को मेल्ट कर दिया जाए तो वो मेल्टिंग के बाद कितना वॉल्यूम होगा उसका। सरफेस एरिया इज उसने इन योर स्पेस, इन योर एयर कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है। So these are two different things. अच्छा जी, let's move on to the next one. अब है वॉल्यूम इन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि ये सिलेंडर होता है तो बेस एरिया इसका पाई आर स्क्वायर हो जाता है, रेडियस वो सर्कल होता है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर आता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला फॉर सिलेंडर विच इज 2 टाइम्स द बेस एरिया प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि सिलेंडर में देयर इज अ कर्व राइट, तो उसकी बात हो रही है। तो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर प्लस द मिडिल वाला पार्ट विच इज 2 पाई आर एच। Okay, so let's read the question first. An open rectangular tank of length 18 centimeters and breadth 16 centimeters contains water to a depth of 13 centimeters. The water is poured into a cylinder container of diameter 17 centimeters. हमें ढूंढना है कि volume of water in the tank क्या था। सबसे पहले तो वॉल्यूम के लिए, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर टैंक है विच मींस इट्स अ क्यूबॉइड, तो पार्ट 1 में जहाँ पे हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं वी कैन सिंपली से लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो मेरी यहाँ पे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट वाज 17, oops I'm so sorry, हाँ, was 18, 16 and 13. So 18 into 16 into 13. When I multiply these three numbers, तो फिर हमारा आंसर आएगा 18 into 16 is a 288, multiplied by 13 is a 3744. 3744 centimeter cube is my volume of water. ये क्वेश्चन पूछ रहा है पार्ट 2 में कि हाइट ऑफ वाटर पता करनी है ऑफ द सिलेंडर कंटेनर। अच्छा जी, अब पार्ट 2 में हमें सिलेंडर का फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज, हम वापस देख लेते हैं। वॉल्यूम इज बेस एरिया इनटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा जी, पाई आर स्क्वायर एच। हमें वॉल्यूम ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने पहले निकाल लिया उस लिक्विड का वॉल्यूम, ठीक है ना। उसके बाद ओके, विच इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 3.142 आर स्क्वायर। अगर 17 मेरा डायमीटर था इन द क्वेश्चन, तो फिर मेरा रेडियस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ दिस व्हिच इज गोइंग टू बी 8.5। तो 8.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हाइट मेरी अननोन है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 3.142 को इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देना है। इक्वल्स टू 3 पॉइंट, इसके स्टेप्स जरा बड़े होते हैं तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये हम कैसे करेंगे, इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन है, इतनी सारी डिविजन है। हाँ है, लेकिन अगेन करना तो पड़ेगा यार, मैथ्स है थोड़ी सी, तो वी डू हैव टू ट्रेन आवर माइंड फॉर दैट। 0.5, और यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन में फिर कैलकुलेटर अलाउ हो जाता है, तो अगेन इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। डिवाइडेड बाय, इनका आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 3.142 which is a 227.009 equals to h। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे डिवाइड करना है 3744 को with 227.009 और मेरा फाइनल आंसर आता है 16.49। 16.49 is my height of the cylinder. That is it. फिर क्वेश्चन कह रहा है surface area of the cylinder ढूंढो that is in contact with the water. Okay, so surface area का formula for cylinder. Okay, surface area का formula हमने देखा था, it was 2 times the pi r square plus वो जो बीच वाला पार्ट होता है उसका कर्व सरफेस एरिया, so that was 2 pi r h। 2 pi r h, तो वो कुछ नहीं करना है, 2 multiply by 3.142 multiply by r square which was, हमने अभी ढूंढा है 72.25, this entire thing plus 2 pi r h, so 2 into 3.142 into 8.5 into height which is 16.49 है, हम 16.5 भी कंसिडर कर सकते हैं। अब दोनों ब्रैकेट्स के अलग अलग आंसर सॉल्व करो और फिर दोनों को आपस में ऐड कर दो। ओके, सो वी हैव 2 multiplied by 3.142, 2 multiplied by 3.142
मल्टीप्लाइड बाय 72.25, इसका आंसर आएगा 454.019 प्लस the other one, उसका फॉर्मूला आ रहा है 2 multiplied by 3.142 multiplied by 8.5 multiplied by 16.5. The final answer is 881.3. Now you just have to add both of them. This plus, okay. We have 454.019 plus 881.5 equals 1335.5 is my surface area. That is it. इतनी सी बात है. हाँ, आई नो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, एज अ स्टूडेंट मुझे भी लगता था, लेकिन ये है कि द की टू सक्सेस इज टू प्रैक्टिस अ लॉट, so just keep on doing it. नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं बाकी के 3 कंपोनेंट्स भी एक्सप्लेन कर दूंगी. एंड so far so good. I hope this was helpful. Thank you so much. Take care. Bye bye. Have a good day.